For here, I, Dr. Pradna Shinde, Assistant Professor of FMT, take this privilege to warmly welcome all HODs, professors, faculty members, beloved students, and esteemed audience on the 6th day of National Webinar organized by Antarbharti Homoeopathic Medical College, Dabha, Nagpur. I sincerely wish that conducting this series of webinars will be a great success as an opportunity to share knowledge and experiences in education as well as in practice, as this webinar is built with intent of active and interactive learning. And I hope that views shared during interaction will sow its seed for a sustained fruitful results. I'm extremely delighted that today we got not only eminent teacher, but also a great practitioner successfully treated amazing cases. To introduce Sir. Sir is Associate Professor and HOD of Department Surgery of Antarbharti Homoeopathic Medical College. He is pursuing PhD from Guru Mishri Homoeopathic Medical College, Jalna. He has done BHMS MD from the most reputed Dr. M.L. Dhaule Homeopathic Institute, Palghar. Sir has treated deep-seated and dangerous cases and produced miraculous results. I'm sure you will definitely enjoy this session. So I request Dr. Pankaj Nimje sir to start the case presentation. Hello. Hello. Hi, madam. Good morning to all of you. Dr. Pradna, madam, is it I am audible? Pradna, madam, I am audible? Yes, yes, sir, yes, sir, you're audible. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir, you're audible. Sound is clear? Yes, sir, sound is clear. Sound is clear. Okay. So thanks for the warm welcome and good morning to all of my teachers, the participants, the students, final year student, interns. I'm trying my best to show you the case where how to approach the how to approach the case where there is a gross pathology is present, how to identify the miasm, and how once we identify the miasm, how that utilize into the selection of remedy, right? So usually we identify the miasm, but we don't know how to utilize that miasm into the selection of for the selection of remedy, right? So directly start with the case. This case is of 40 years male patient, Mr. Riaz, who educated till BSc and D.Pharm, having the timber shop, residing at Bhadravati, having the two children. One is the 10-year son and 7 years daughter. The case was taken on 2021. It is the last year, 26/11 November. On the November, that means it is the 1 year back. And the important things here is the case was referred by my friend, who is also a friend of the patient. Who is my friend is a doctor as a gynecologist working in a GMC, government medical college, because he feels that the homeopathy can do the better than the operative procedure. That's why he refer the patient to a homeopath. That means towards to me. And now I will start the case. Try to listen carefully. Try to note down the important points so that we can discuss it. You have to form the totality. You have to identify the miasm so that we can or you can learn the maximum out of this.
because if you just listen it passively without the active interaction or active activating your brain, then it will be not a useful session. So if you want to make it useful, listen carefully, note down and participate in the discussion, please. Is it I'm audible, na? Madam? Yes, sir. You are audible. So I already told 40 years male patient came with the complaint of sudden severe agonizing pain, which is the intermittent episodic type on and off comes since the 2012. It is 2012, that means 8 to 9 years that the patient is suffering with this condition. The pain is so much agonizing that he has to twist and turn, become restless. The pain get radiate to the back or sometimes to the chest. With the pain, there was a constant vomiting, nausea, then constant vomiting, and once the vomiting, then later on there is a retching, because once the food in the stomach gets emptied, then there is a dry vomiting, that is called the retching. With sometimes there was a loose motion with the abdominal pain. Patient gets aggravated, the complaints get aggravated by drinking the alcohol, by eating, by drinking, by spicy oily food, by non-veg, and by overeating. This overeating means if patient has to take the must take the one chapati or blind diet only. If he took the more than one chapati, then the pain start or pain increase. There was a pain in the milder form, but pain get increase when there was a excessive eating, when there was a alcohol consumption, when there was a spicy, oily, non-veg eating. And once the pain get aggravated, patient has to manage it by admitting in the hospital. It was not managed with the painkiller or tablet. He has to admit in the hospital, and then only the pain gets relief. Now the history, how the this disease or how this complaint start. The complaint start on the 2012 with the sudden pain in the epigastric region. The pain is in the epigastric region, and because of the pain with nausea and there was a vomiting, patient first shown to local uh, practitioners. He diagnosed it as a APD and given the medication, and patient feels better. But even but after 2 weeks again, after drinking the alcohol, again the pain start in the epigastric region, which radiate to the chest, which radiate to back, which there was a nausea, vomiting, all these symptom was there, and patient has to admitted in the hospital because of that. Here, this time the pain was not get better with the uh, tablet medicine, right? So patient has to admitted in the hospital and was diagnosed as a acute pancreatitis. Acute pancreatitis. In this condition, the patient appetite was reduced. Patient has thirst more. Patient was thirsty, but thirst for the cold water, especially. Right? Now, after 3 months, when was admitted, patient gets relief. Right? Then after 3 months, again the acute attack of abdominal pain comes. Again, then episode of abdominal pain comes in 3 to 4 times in a year, and he need a hospitalization in every time to relieve the pain. Right? Multiple episode of abdominal pain was there where the hospitalization was needed, and the doctor prescribed the enzyme tablet, that is the tablet lipase. Patient was alcoholic. Patient was alcoholic since 2007. He has taken the more than 180 ml of alcohol daily, and was stopped alcohol, taking consumption of alcohol at the July 21, months after the attack. Because you see, every time the patient consume the alcohol, the acute abdominal pain start. So doctor strictly restrict the alcohol consumption, right?
Endocrine system, he was detected as a diabetes mellitus, because the insulin was more than 400. Sorry, sugar was more than 400. That means 498 post meal, and the HbA1c was the 8.6. This was detected when the patient was admitted for acute abdominal pain. So when he was admitted for acute abdominal pain in 15 June 2020, he was detected with the diabetes, and the sugar was uncontrolled. For that, he has to prescribe the injection, not a tablet, because it is the insulin dependent diabetes. So human actrapid was prescribed. That patient has to take it 4 units morning, afternoon, at the night or evening, right? Again, the patient also having the hypertension since long. For that, he has to take the tablet Telmerose M and tablet Amlodep Diff. With this, the patient also having difficulty in opening the mouth. On examination, I have seen the fibrosis in the mouth, because the patient consumed the kharra since the long time. So there was a oral submucous fibrosis in the mouth, right? So we have the this much symptoms. Patient is alcoholic. Patient is addicted to alcohol. Patient is chronic alcoholic with excessive drinking since the 2007. Daily consumption of alcohol more than 180 ml. Already I have stated, and the consumption of alcohol was stopped temporary since the July 2021. The patient still taking the kharra. जब केस डिफाइन किया था, the patient is taking the kharra, right? Now come to the physical examination. On history taking, when I examined the patient, the slight average buildup, but there was a loss of weight. The weight loss since the complaint start was the 14 kg. It was the 14 kg loss, not since complaint, but in 3 to 4 months, when the episodes of abdominal pain was increased. Since the episode of abdominal pain was increased, the patient weight get reduced, and it was the significant reduction of weight. You have to note down this significant reduction of weight. It is, I think, not a 3 to 4 months, it is in 3 to 4 years, where the episodes of pain gets worsened. The BP was 140/100. Even after taking the antihypertensive drugs, the BP still is on the higher side. Note this. The conjunctiva pale, nose is normal, tongue coated, RS clear. Per abdomen, when I examined per abdomen, there was a tenderness over the epigastrium and abdomen was distended, right? Appetite was decreased since the complaint start. The patient is very thirsty, thirst for the cold water since complaints, hunger intolerance, craving for salt, craving for sweet, craving for oily food, craving for non-veg. Natural elimination, perspiration was profuse and offensive. Stool was unsatisfactory. Stool was oily, greasy, and blackish. If you see, if you read the chronic pancreatitis or acute pancreatitis, where the inflammation of pancreas and the destruction of the pancreatic cells occurred, there was a oily, greasy stool patient having, and there was a hemorrhage, pancreatic hemorrhage, and because of the upper gastrointestinal bleeding or hemorrhage, the patients having the melena, that is the blackish stool. This is also important points to note down, because this indicate the severity of the disease. Urine complaint, there was no urine complaints. Sleep was sound but startled during sleep. There was a dreams occasionally of dead people. Thermally, patient having a heat intolerance, warmth aggravation, having the significant sun heat aggravation causes the ghabrat and headache. Patient causes the headache when he exposed to sun heat. This is significant 3+. Draft of air doesn't having any complaints with the draft of air, but the damp and rainy wet weather causes the headache, body ache, and dullness in the patient. So this is the significant aggravating modality, constitutional sensitivity. Woolens not required. So after
assessing the whole thermal criteria, the patient comes to a hot. If you see other general symptoms, the patient doesn't tolerate the tight clothing. He prefers the loose cloth. Closed room doesn't say. Noise intolerance. There was a noise intolerance, and patient is sensitive to noise. Odor sensitive. No. So there was a tight cloth sensitivity and noise sensitivity you get at the physical level, right? So there was a life space. The life space. Try to understand this. This is so much long life space. We have to interpret we have to identify the person. We have to interpret the mental symptoms from this life space. So be attentive. The patient's father, when I ask about the life and how this problem start, he narrated that patient father was running a business as a timber mart. Timber, लकड़े का जो business रहता है, wood. Elder brother also participate in the business along with the father, but he has habit of drinking alcohol and not perform his duty properly. So elder brother is consume the alcohol, and because of the consuming alcohol, he has not performed his duty in the business. He cheating regarding the calculation of money from brother side. The brother क्या करता था कि जो पैसे आते थे कस्टमर से, वो अपने जेब में रख के थोड़े पैसे सिर्फ फादर को देते, पिताजी को देता था. तो पिताजी को समझ गया. So and there was a frequent quarrels between the father and the brother. So father lost the faith on the son. Father lost the faith on son, है ना, जो elder brother है, because brother when dealing with the customer return less amount of money. Gradually the business goes into the loss. So when father realize कि उसका जो बड़ा लड़का है उसके जो बिहेवियर है, because he is under the influence of alcohol, उसके बिहेवियर के कारण business loss हो रहा है, तो he got tense and he narrate these things to the younger son who is doing the B farm, right, away from the city. So पिताजी को लगता था कि अपना लड़का जो यंगर सन है उसने बिजनेस संभालना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा लड़का है इज नॉट अ compatible टू टेक द बिजनेस होल्ड. सो व्हेन ही नरेट, मतलब पिताजी ने जब वो पेशेंट को बताया कि ऐसे ऐसे सब चल रहा है बिजनेस में, सो ही डिसाइडेड टू लिव द एजुकेशन. दैट मींस ही वाज डूइंग द बी फॉर्म, और बी फॉर्म में उसने एडमिशन लेने के लिए काफी हार्ड वर्क किया था, पर पिताजी का जो दुख है या घर की जो कंडीशन और बिजनेस की हालत, उसको देख के उसने डिसीजन लिया कि अभी बिजनेस छोड़ देते हैं और घर जाते हैं और बिजनेस को संभालते हैं. सो ही left the B Farm for in 2004 and involves in the business. तो वो जब बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ तो देखा कि ब्रदर का बिहेवियर काफी अलग है. वो ड्रिंक करके काफी सारा पैसा उसमें ड्रिंक में स्पेंड करता है और कस्टमर से बात करना या कस्टमर से ठीक तरह से डील नहीं करता है, क्योंकि जब कस्टमर के कॉल आते थे तो वो उठाता नहीं था, है ना, और जो डिलीवरी है, जो माल की डिलीवरी है, वो भी टाइम में वो देता नहीं था. सो देयर वाज अ frequent quarrels between patient and his elder brother because the brother was consuming alcohol throughout the day, और उसका असर पूरे बिजनेस पे पड़ रहा था. तो एक दिन उसने ऐसा डिसाइड किया कि अभी जो भाई जो है जो बार में जाके पीता है तो उसके पीछे जाना, तो उसके पीछे गया एंड ही आल्सो स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल इन फ्रंट ऑफ द ब्रदर. वो ब्रदर के सामने बैठा और खुद दारू पीने लगा पेशेंट. And gradually in the tension and that depressed state of mind, gradually patient also indulge in the habit of drinking excessive alcohol, and there was a lot of anger and vexation in the patient mind as the business goes down due to the brother's behavior. But brother तो पीता ही था, अभी patient भी पीने लगा, right? Patient feels bad as he was not able to complete his education. वो अपना एजुकेशन नहीं कर पाया, या बिजनेस के लिए फादर को लेके जो उसमें टेंशन आया था उसके कारण उसने अपना एजुकेशन आधा अधूरा छोड़ के वो यहाँ आ गया बिजनेस संभालने के लिए. तो फॉर दैट व्हेनेवर ही realize that he feels bad and depressed about that, right? Patient got married in the 2008, right? He decided to take the responsibility, though
द बिहेवियर ऑफ द ब्रदर वाज दैट, पर उसने यंगर होके भी उसने ये सोचा कि अब मैं घर की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली हिज फादर वाज डाइड इन द 2017 एंड आफ्टर 1 month मदर आल्सो डाइड। द पेशेंट हैज शॉक कि थोड़ा बहुत जो सपोर्ट था मुझे, क्योंकि ब्रदर का सपोर्ट तो नहीं था, वो भी चले गया। तो पेशेंट अल्कोहल इंटेक वाज इंक्रीज आफ्टर द पेरेंट्स डेथ, right? Patient alcohol intake was increased. Patient feels very angry as his brother did not focus on the business and even didn't pick up his customer phone and failed to provide the material, right? Also customer भी उसके भाई की कंप्लेंट पेशेंट के पास करता था। तो पेशेंट का बिहेवियर क्या होता था, पेशेंट फिर दारू पीने लगता था, दारू पीता था रोज एक्सेसिवली, एंड देन ही कम्स टू द होम एंड फाइट विद द ब्रदर। तो वो जो मारता था, अपने बड़े भाई को मारता था, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ एंगर, और इतना उसको गुस्सा आता था कि बड़े भाई को अभी मार डालू। So he feels like kill his brother in anger. So that much anger, that means the anger violent and destructive that patient having. The whole family get disturbed because of that, but patient also feel regret in the morning about his behavior with the brother। जो कि रात में मैंने बड़े भाई को मारा, मैं छोटा होके बड़े भाई को मार रहा हूँ उसके फैमिली के सामने, उसके वाइफ के सामने, तो उसको थोड़ा रिग्रेट और गिल्ट फील होता था। बट अगेन सेकंड डे वो फिर से दारू पी के आता था, फिर से मारता था, तो ये ऐसे ही चलता था। तो so the regret was temporary, the remorse feeling was temporary, right? The in childhood he residing in the joint family. Now the we are describing about the childhood of the patient. In childhood he residing in the joint family with uncle. So it is mentioned the grandfather, actually he was the elder, मतलब जो पिताजी के बड़े भाई है वो साथ में थे, जो उनका साथ में कारोबार था, पिताजी के बड़े भाई, दैट मींस आई थिंक इट इज अंकल बोलते हैं उनको। सो अंकल और उनके चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो बल्लार शाह में सब जॉइंट फैमिली रहते थे, पेशेंट, उसके पिताजी, पिताजी के बड़े भाई, ऑल दैट। बट होल्ड ऑफ द फैमिली जो है वो पूरे अंकल के पास थे, बिकॉज दे ओवर पावरिंग द ऑल द फैमिली मेंबर, वो डोमिनेट करते थे, और उन्होंने बिजनेस को पूरा अपना लिया था। तो उसके पिताजी जो है, जब ही वर्क लाइक एम्प्लॉय, और वो कुछ बोल नहीं पाते थे, वर्क करते थे, काम करते थे सिर्फ, उसको उनको कुछ पैसा पैसा नहीं मिलता था, राइट? ही वेर ऑल लिविंग लाइक अ स्लेवरी, है ना, नौकर की तरह काम करते थे, एंड हैविंग द नो वैल्यू और नो एग्जिस्टेंस देयर। पेशेंट को लगता है कि हमारी कुछ वैल्यू नहीं है, हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, नहीं था वहां पे। व्हेन ही वाज द 10th स्टैंडर्ड, कुछ इंटरनल मैटर हुआ और अंकल ने सबको, मतलब इनको, पेशेंट और उसके फैमिली को, फादर को और उसके फैमिली को सेपरेट कर दिया, अलग निकाल दिया, मतलब घर के बाहर निकाल दिया। That time the patient got very angry, but he didn't express. So there was a lot of anger was suppressed. There was a lot of struggle and financial problem after that, because जो source, money source था, जो बड़े पिताजी के पास था, वो चले गया था, तो उनके पास काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गया आफ्टर दैट। पेशेंट हैज लॉट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड फीलिंग टुवर्ड्स द अंकल बिकॉज ऑफ दिस, कि पेशेंट में काफी ज्यादा गुस्सा और घृणा पैदा हुआ अंकल के प्रति, जो उसके बाद उसने कभी बात नहीं किया, उसको अंकल से काफी घृणा या गुस्सा निर्माण तैयार हो गया था। दे फेस ड्यू टू विच पेशेंट कुड नॉट फॉरगेट द मेमोरीज। और वो जो बचपन की मेमोरी है, पेशेंट अभी भी रियलाइज करता है, वो भूल नहीं पाता है। और जब जब पेशेंट को ये सब थिंग्स याद आता है कि अंकल ने उसके कैसे बिहेवियर था, कैसे वो डोमिनेट करते थे, कैसे हम नौकर की तरह रहते थे, तो जब जब ये सब याद करता था, तो उसका अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ जाता था। ही टेक द मोर एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, राइट? Usually patient easily gets angry and irritable in nature. Patients gets anger on contradiction. Patient is very sensitive in mentally and offended easily. Once the patient make एक किस्सा बताया कि एक बार फ्रेंड ने पेशेंट को कुछ चिढ़ाया था, बराबर है, मॉकरी या रेडिकुल किया था, तो उसके बाद पेशेंट ने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। मतलब इतना गुस्सा आता है कि, तो मतलब पेशेंट इज सेंसिटिव टू रेडिक्यूल, पेशेंट इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। कोई क्रिटिसाइज करे, कोई चिढ़ाए, तो पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता।
He is very reserved in nature, doesn't share his feeling to anyone, even to his wife, right? Okay, till this, when asked to wife, अभी wife को पूछा patient के बारे में. Whenever the patient comes, always if there is any accompaniment who is close to the patient, ask about the patients, a patient behavior, या always ask about बर्गर सैंडविच दूसरी बार से नहीं आया जब से patient जब there is a interaction, तो सो पेशेंट का बिहेवियर या पेशेंट जो डिसीज स्टेट में पेशेंट का बिहेवियर में क्या चेंज हुआ, यू ऑलवेज आस्क टू द अकम्पनीड पर्सन हु कुड बी अ वाइफ, कुड बी ब्रदर, सिस्टर, मदर और फादर, right? You will get the some important data from it. So according to the wife, the patient is very angry and abusive in nature. He fights and beats frequently to his brother, elder brother, after drinking alcohol, but regret in the morning. But since his suffering increase, he feels regret about his wrong deeds and bad habits and trying to change it. But this is temporary, trying to change, but again there was a alcohol consumption, again there was a fighting. But he taking the responsibility of whole family very seriously. Things remains in his mind for a long time. That means there was a brooding, get tense easily and feel sad, never share the feeling. That was the reserve nature. Though his brother is eldest in family, he used to drink all time and has no little attention to manage the business. He is very sensitive and emotional in nature, right? So when I ask the patient why you abuse or why you drinking the alcohol, जब patient को पूछा गया कि आप alcohol क्यों लेते हैं, why you taking the excess of alcohol which leads to your physical damage, which leads to a pancreatitis, मतलब इतना अल्कोहल की एक important organ में destruction शुरू हो गया. So in spite of that, the patient had the recurrent abdominal pain. उसके बावजूद patient didn't leave the alcohol completely, right? So he used to drink when he remember his painful past and can't able to forget it. जब पूछा कि आप दारू क्यों पीते हो, any person who is alcoholic or alcohol abuse or alcohol addicted. See, taking alcohol has a lot of things, social alcohol consumption, and the alcohol abuse or alcohol addicted is the different. Alcohol addicted is having the daily alcohol consumption, because without it he can't able to do the performance. He has uska internal desire itna रहता है कि उसको पीना ही पड़ता है. If not, then there was a symptom started, there will be a symptom started. So what was the reason? And always ask why you indulge in the alcohol. So when I ask कि जो बचपन के painful थिंग्स है, जो मेमोरीज है, जो अंकल की है या उनके फैमिली मेंबर ने जो हमारे साथ बर्ताव किया है, वो सब मुझे याद आता है. और इन दैट स्टेट आई हैव टू ड्रिंक मोर, आई हैव यूज्ड एक्सेसिवली, आई हैव कंज्यूम्ड द एक्सेस अल्कोहल. सो ही ड्वेल्स ऑन द पास्ट पेन एंड सफरिंग ऑफ हिज लाइफ. तो पेशेंट का कहना क्या था, मागच्या लाइफ मध्येच राहिलो, मतलब वो अभी भी जो उसकी पास्ट लाइफ है उसी में है. मतलब पास्ट लाइफ में जो दुख उसने सहन किया है, जो सफरिंग, जो दुख उसको हुआ है, वो अभी भी वही लाइफ में है. उसके कारण वो लाइफ में, पास्ट लाइफ में जीने के कारण वो अभी मतलब अल्कोहल का कंज्यूम, अल्कोहल ज्यादा पीता है. और विथ दिस द बिहेवियर ऑफ द ब्रदर, the uncle and his family always criticize us and make us feel as we are dependent on him. कि हमको रियलाइज करते थे कि तुम सब लोग हमारे पे डिपेंड हो, राइट? सो दिस इज द लाइफ स्पेस. सो once you get the life space, we get the physical general examination, all the things are complete, मतलब पूरा केस हो गया, right? now comes the केस वर्किंग और केस एनालिसिस, है ना? LSMC हो गया, फिजिकल जनरल हो गया, है कि नहीं? नाउ कम टू द केस एनालिसिस, कि अभी केस को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे. हम पहले क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, राइट? कि डायरेक्ट टोटलिटी निकालेंगे या डायरेक्ट मेंटल सिम्टम्स निकालेंगे. इन ऑर्डर टू
draw the totality or person totality of symptoms, we have to first understand the disease in the person. In order to understand the person as a whole, we have to first understand the disease in it. So that means the disease diagnosis. The diagnosis of what? Diagnosis of what? First, most important is the disease diagnosis. Very, very important. Once you diagnose the disease and pathophysiology and underlying pathology, then miasmatic diagnosis is important. And once you miasmatically diagnose the things or case, then person diagnosis is important, right? And after all this diagnosis, then comes to the totality. बराबर है? Then you can able to draw a complete picture or able to understand the complete picture of the person, disease, person, understanding all this, right? So what could be the disease diagnosis? Anyone if want to participate? There was a recurrent abdominal pain, mostly epigastric pain, radiate to chest, radiate to back. There was a agonizing pain. There was nausea, vomiting, lot of retching, है ना? और पेशेंट उसके लिए उसको एडमिट ही होना पड़ता था because this type of disease doesn't respond to the tablet form of painkiller or even doesn't respond to injectable painkiller. Because when I was the medical officer in the MLW hospital in the surgery department, I have seen the cases where the case of pancreatitis comes, acute pancreatitis, even the injection form of painkiller was not respond easily, patient not respond, and patient twist and turn. Mostly patient gets better slightly on leaning forward. So that much pain, intensity of pain of pancreatitis, mostly the acute episode of abdominal pain. So once if you see पेशेंट में क्या है अल्कोहल, सो हाउ इज नो कि इट इज अल्कोहलिज्म? कब बोलेंगे कि अल्कोहलिज्म है या अल्कोहल एब्यूज है या अल्कोहल एडिक्टेड है? अल्कोहलिज्म इज रिलेटेड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एविडेंस ऑफ रिपीटेड impairment from alcohol in multiple areas of life functioning, despite which the person returns to drinking. उसको पता है कि पूरे लाइफ सोसाइटी उसका घर पूरा डिस्टर्ब हो गया है, फंक्शनिंग पूरी डिस्टर्ब हो गई है, इन स्पाइट ऑफ दैट पेशेंट इंडल्ज इन द रिटर्न टू ड्रिंकिंग, मतलब फिर से बार में जाएगा, फिर से ड्रिंक करेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहलिज्म अकॉर्डिंग टू द कैप्लन एंड सडोक psychiatry textbook of psychiatry. Now the DSM-4 provide the general criteria for all substance use disorder. Substance use मतलब any ganja, marijuana, all this, even the alcohol substance. So there was a tolerance as defined by either of the following: need for markedly increased amount of the substance to achieve the intoxication or desired effect. Try to understand if someone drink the 30 ml, बराबर है? आपको सब जनरल नॉलेज तो होगा कि जो अल्कोहल जो भी लेता है तो उसका भी क्वांटिटी होता है, 30 ml, 60 ml, 90 ml, 180 ml, 360 ml, कितना लेता है, दैट क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अल्कोहलिज्म और अल्कोहल एब्यूज. सो अब अगर कोई पर्सन 60 ml अल्कोहल कंज्यूम करता है, आफ्टर दैट मतलब वो 60 ml कंज्यूम करने के बाद उसको वो फीलिंग आता है, बराबर है कि इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग और फीलिंग समथिंग प्लीजर सेंसेशन, बराबर है कि नहीं, प्लीजर फीलिंग आता है, तो कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद वो 60 ml से उसको प्लीजर फीलिंग आना नहीं आएगा, तो ही हैज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल. तो उसको अभी 90 ml लेना पड़ेगा, 90 के बाद फिर 120 या 180, तो ऐसे क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इंक्रीज होता है बिकॉज उसमें डिजायर इफेक्ट नहीं आता है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट. Need for markedly increased amount of substance to achieve the intoxication or desired effect. Markedly diminish effects with use of same amount of substance, right? Withdrawal as manifested by the either of following. Withdrawal syndrome for substance. Withdrawal मतलब अगर वो नहीं लेता है तो patient feels agitation, घबराहट, sleeplessness, irritability, all the symptoms that patients feel if he has not taken the alcohol or any substance, right? Other substance. The same substance is taken to relieve or to avoid the withdrawal symptoms. अगर वो withdrawal में गया है and there was a agitation, irritability, trembling, अगर ये सब होता है किसी के, आपने कभी देखा होगा आजू बाजू में
जब ड्रिंक करता है या अल्कोहल डेली लेता है, अगर कुछ किस दिन नहीं मिली तो इवन द स्पीच इज ट्रम्बल, एक्सट्रीमिटीज ट्रम्बल, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, और उस समय अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो ऑल सिम्टम्स गेट वैनिश. So in order to get relief of that, also the patients consumed more alcohol or return to the alcohol. So he is not able to stop the alcohol because जैसे stop करता है तो तकलीफ शुरू होती है, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो फिर से पेशेंट अल्कोहल की तरफ जाता है, फिर से अल्कोहल पीना शुरू कर देता है. This is the thing that happened with the alcoholic person. The substance is often taken in the large amount or over a longer period than was intended. तो सब्सटेंस लार्जर अमाउंट में और लॉन्गर पीरियड के लिए होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई अगर दो दिन महीने में एक बार पीता है या 6 महीने में या साल में, तो उसको हम वो बोलेंगे. सब्सटेंस इज अ रेगुलर पीरियड एंड larger amount. There is a persistent desire for unsuccessful effort to cut down or control substance use. There was a desire to cut down, मतलब उसको तकलीफ हो रही है पर वो कट डाउन नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता. The great deal of time is spent in activity necessary of, हाँ, और उसको वो सब्सटेंस या अल्कोहल लेने के लिए, अल्कोहल के लिए कहीं पे भी और कुछ भी कर सकता है. ये ऐसे लोग रहते हैं कि जो अल्कोहल या सब्सटेंस एडिक्टेड रहते हैं. जैसे आप देखेंगे कि तंबाकू वाला भी, जो टोबैको च्यूइंग वाला भी है, अगर शादी में जाता है तो बराबर वो अपना कलीग पकड़ लेता है कि जिसके पास टोबैको है और उससे वो मांग के खा लेता है. या अल्कोहल वाला भी वैसे ही रहता है जो अल्कोहल डिपेंडेंट है, जो अल्कोहल एब्यूज और अल्कोहल एब्यूज एडिक्टेड है, वो अगर बाहर गांव भी जाता है, कहीं शादी में फंक्शन में जाता है, तो वो अपना रास्ता खुद देख लेता है और देख लेता है कि कहाँ अल्कोहल मिलेगा और वो अल्कोहल कंज्यूम करता ही है. राइट. So this is the things that about the alcohol dependency and alcoholism. If the criteria fit, then you can say the person is alcohol abuse or alcohol dependent, or there is a alcoholism. Now how the alcohol development of alcoholism happened, मतलब कैसे वो alcohol की तरफ जाता है. It usually takes the alcoholic between 5 and 15 years. alcoholism कब बोलेंगे और alcohol abuse कब बोलेंगे, कि जब वो 5 साल से 15 साल तक जब कंज्यूम करता है. इट इज है ना, टू डेवलप व्हाट इज कॉल्ड क्रोनिक अल्कोहलिज्म, मतलब 5 साल से 15 साल लगते हैं क्रोनिक अल्कोहलिज्म डेवलप होने के लिए. राइट. ड्यूरिंग दिस टाइम अल्कोहल इज यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली टू रिलीव द एंजाइटी एंड टेंशन इन ऑर्डर टू कोप अप विद द वर्ल्ड. बराबर है. तो अल्कोहल पीने के पीछे भी कारण होता है, बट वंस इट स्टार्टेड देन he indulge in that. As one alcoholic said, mostly the alcoholic होते हैं, बराबर है कि नहीं, वो ऐसे ज्यादातर बोलते हैं कि when I am frustrated, when I am in a tense, frustrated, बराबर, I drink alcohol. Then I get more frustrated, so I drink more alcohol. Try to understand this sentence of the अल्कोहलिक पर्सन. व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मतलब जब मैं टेंशन में और फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्कोहल लेने से, अल्कोहल कंज्यूम करने से मेरा टेंशन चले जाएगा, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा. पर जब वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो और टेंशन में आते हैं, तो उनको और ड्रिंक करने की इच्छा होती है और अल्कोहल कंज्यूम करने की इच्छा होती है. तो ऐसे साइकिल बना रहता है. बराबर है. अल्कोहल लेते हैं टेंशन कम करने के लिए, टेंशन बढ़ता है, फिर से अल्कोहल लेते हैं. बराबर. अल्कोहल कभी अगर लिए नहीं तो कंप्लेंट स्टार्ट होता है, एजिटेशन होता है, स्लीपलेसनेस होता है, तो फिर से अल्कोहल पीने लगते हैं. तो ये ऐसा साइकिल बना रहता है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द to remove this addiction. It is not impossible, but it is a difficult even to treat such a patient who is the alcohol dependent. I know this all practically because in MD my dissertation was on this topic, alcoholism, alcohol, psychodynamic in the alcohol. One of my colleague having the topic like alcohol withdrawal management कैसे करना है कि नहीं. तो whole our batch taken a topic depends on the alcohol and alcoholism, right? So I have treated the cases who goes into the alcohol withdrawal and was admitted in the that hospital, Nemel Hospital, and was we treated such a patient
only with the homeopathic medicine very wonderfully. And there was a very wonderful effects, even if the patient was violent, agitated, sleepless, and few doses of homeopathic medicine, if you select correctly, is correct minimum, the patient comes out of the alcohol withdrawal. Patient comes out of the alcohol withdrawal within a short period of time. Or this homeopathy also helps to remove the addiction, to remove the dependency. So, right now, this is the alcoholism one part. Second is the we have to first if you want to understand the disease, we have to understand what is the pancreas, function of pancreas, what are the expressions or clinical feature of pancreas, pathology of if the inflammation occurs, so that we can understand the disease properly. And once we understand the disease properly, we can able to do the miasmatic diagnosis, or we can able to understand the miasm involved, right? So everyone know who is what is the pancreas. वो छोटा सा 90 ग्राम का एक छोटा सा organ रहता है, which is the retroperitoneally. अपने जो curve रहता है second part of duodenum वहाँ पे fix रहता है, बराबर. There has a lot of important exocrine and endocrine cells. Though it is the 90 ग्राम या 80 ग्राम organ है छोटा सा, but it has the dangerous फंक्शन, मतलब फंक्शंस काफी बड़े हैं उसके, और अगर कुछ डैमेज होता है या फिर कुछ फंक्शनिंग नहीं होता है तो उसके इफेक्ट अलार्मिंग इफेक्ट होते हैं. सो मोस्टली this pancreas having the cluster of endocrine cells known as isolates of Langerhans. It is very important cells. Isolates of Langerhans are distributed throughout the pancreas. Isolates consist of different cells. Isolates of Langerhans जो cells होते हैं जो पूरे pancreas में distribute होते हैं, उसमें एक beta cells, different cell. The beta cells are there, which are 75%, and these beta cells having the function to produce the insulin. And everyone know what is the function of the insulin. Insulin has very vital function in our body, but he work as a carrier to, it is work as a carrier. वो ग्लूकोज जो ब्लड का है उसको सेल में पहुंचाने का काम जो ये इंसुलिन का रहता है, बराबर है कि नहीं? That's why the person who having the deficiency of this insulin, उसको टैबलेट देना पड़ता है इंसुलिन फॉर्म में, या फिर अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बीटा सेल्स जिसमें है डिस्ट्रक्शंस, जहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है नेचुरली, उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन. See, if the destruction of whole the beta cells occurred because of some morbid condition or underlying pathology, so patient has to take the for the insulin throughout the life. This is so much important function of this pancreas, and in pancreas the beta cells. There are also some quantity of A cells called which produce the glucagon, has the different function. Even the D cells having the somatostatin and some amount of polypeptide cells. Within an isolate, the beta cells form an inner core surrounded by the other cells. Capillary draining, the isolate drain into the portal vein, forming a pancreatic portal system. So, if there is a damage to the pancreas, see, though it is a small organ, if there is a damage to the pancreas, it leads to the, it reflects over the whole of the multiple system in our body. तो जब इन्फेक्शन होता है पेनक्रियाज में या इन्फ्लेमेशन होता है, there was a, if it is the severe and not treated within a short period of time, it may leads to multiple organ failure, and patient may die due to the multiple organ failure within a short period of time. And patient doctors कुछ कर नहीं पाते बिकॉज उनको ये रीजन नहीं पता होता है कि पेनक्रेटाइटिस तो हो गया, तो कब वो हिमोरेजिक पेनक्रेटाइटिस हो जाएगा, कब नेक्रोसिस हो जाएगा, कब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चले जाएगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई द पर्सन हु हैविंग द पेनक्रेटाइटिस एक्यूट एपिसोड, or who person who admitted in the hospital as a pancreatitis with acute pancreatitis, always that person admitted in the ICU. Try to understand, because constant watch is very important, because once the patient goes into the complications like hemorrhagic, then it is threatening to the life. So emergency management or emergency management is very important. That's why the patients admitted in the ICU, right? Now pancreatitis patient, right?
So because in the when the pancreatitis occur, because of the जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है उसमें लिवर भी पार्टिसिपेट होता है, पोर्टल सिस्टम पार्टिसिपेट होता है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, लिवर में हिपेटोमेगाली डेवलप हो सकता है, स्प्लीन अफेक्ट हो सकता है तो स्प्लिनोमेगाली भी हो सकता है, राइट। तो ऑल दिस थिंग, एक ऑर्गन छोटा सा अफेक्ट होने के कारण बाकी सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें भी इफेक्ट देखा जाता है, राइट। इज इट आई एम ऑडिबल ना? हेलो, इज इट साउंड इज क्लियर? हेलो, Yes, 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 sir. yes, audible, या Yes, audible, sir. audible. now Yes, try to audible. try to understand what are the investigations we usually advise to the patient once the pancreas gets damaged, or there was a disease of the disease of the pancreas. We should know this because once the patient comes to you and if you feel there could be a damage to the pancreas or pancreatitis, acute, chronic, or whatever it may be, so what investigation you must suggest to the patient, that you should know. And always try to understand the investigation should be from smaller to larger, means पहले जो जरूरी है, if it is the blood investigation जरूरी है और उससे ही आपका diagnosis हो रहा है, so there is no need to do MRI, ERCP, MRCP, बराबर है। नहीं तो अपन छोटा इन्वेस्टिगेशन जिससे हमको पूरा मैनेजमेंट हो सकता है या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर वो नहीं करते और लार्जर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, then it is the waste of time and waste of the money from the patient side, right? So investigation mostly advice is the serum enzyme level, because sorry for disturbance, because when the pancreas get damaged, there was a enzymes released from the pancreas. It's the enzyme which is active enzyme, serum amylase, serum lipase, which indicate there was a damage in the pancreas. That's why whenever there is a inflammation in the pancreas, the foremost thing we always advise to the patient is the blood investigation, blood to see the serum amylase and lipase. If it is a threefold increase, it is up to the 80, up to 120, 130 रहता है. अगर 300, 400 अगर आता है, so that means there is a active inflammation of in the pancreas. The pancreatic, second is the pancreatic function test. जो pancreatic juice होते हैं, pancreatic duct से निकलते हैं, है ना, pancreatic juice वो बराबर secrete हो रहे कि नहीं, है ना, वो देखते हैं. तो उसके लिए कुछ अलग परफॉर्मेंस रहता है, जिसमें पेशेंट को भूखा रखते हैं या फूड देते हैं और जो जूस निकलता है उसमें एंडोस्कोपी के लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ जूस वो रिलीज हो रहा है. That gives rise to whether the function of pancreas is normal or not, that we assess. The morphologically, if you want to see the pancreas morphologically, that means anatomically or structurally, then you have to first think of ultrasound, that means USG. Don't jump to the CT scan or MRI, first see the ultrasound. But the ultrasound has the limitation. Ultrasound only you can see or you can get in the ultrasound the बड़ा बड़ा जो things होता है, जैसे इडिमेटस पेनक्रियाटाइटिस मिलेगा या सोलन पेनक्रियाटाइटिस, अगर फ्लूइड कलेक्शन है तो वो दिखेगा. पर अगर माइक्रो अंदर का पार्ट देखने का है या सेल्स देखना है या पेनक्रियाटिक डक्ट देखना है, एसिनार देखना है या ब्रांचेस देखना है डक्ट के, सो देयर वाज another advanced investigation like a CT scan, MRI, and again there was a specific test in order to understand the biliary structure and the pancreas, right? And that investigation is called as the ERCP, that is called endoscopic retrograde cholangiopancreatography, right? This is the invasive technique, invasive investigation where the like endoscopy है ना, एंडोस्कोपी जैसे करते हैं ना उसी तरह से है, बट यहाँ पे क्या देखते हैं, बिलियरी सिस्टम या पेनक्रियासिस के फंक्शन, स्ट्रक्चर सब देखा जाता है. इसमें और एडवांस है कि MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी. दिस इज नॉन इन्वेजिव और कम खर्चे में होता है और पेशेंट को तकलीफ नहीं होती इसमें, राइट? इसमें पेशेंट को तकलीफ नहीं होती. दिस इज ऑल्सो this is also a test where everyone is doctors preferred, मतलब MRCP, क्योंकि इसमें नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, एंड कॉस्ट इज
less than the ERCP, right? Even we can advise the plain radiograph for chest, upper abdomen if there was a complications, but radiograph or X-ray doesn't shows gives rise to much informations, right? So these are the investigation mostly we can think of when there was a inflammation of pancreas or the disease of pancreas occurs. So what is now pancreatitis? Acute pancreatitis is nothing but the inflammation of pancreas where the patient present with a severe acute abdominal pain and there is a increased rise of serum level of pancreatic enzymes like amylase and lipase, and there was a CT scan में आपको changes दिखेंगे, है ना, swollen pancreas or collection of the fluid, all this. Acute pancreatitis may be categorized into the mild, moderate and severe. Mild में ज्यादा से ज्यादा edema रहता है और सीवियर में क्या हो सकता है, सीवियर पेनक्रेटाइटिस नेक्रोसिस हो सकता है, अब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है, बट इट इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग. सो अगर माइल्ड है, माइल्ड पेनक्रेटाइटिस, तो इजीली ट्रीट करना चाहिए या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ट्रीट किया जाता है. वंस इट इज द कॉम्प्लिकेशन और सीवियर, देन देयर कुड बी अ सर्जिकल मैनेजमेंट और ऑपरेटिव प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, राइट? Acute pancreatitis characterized by systemic inflammatory response syndrome. It is not a single. ये pancreas सिर्फ एक organ का disease नहीं है. It is a multi-organ disease. If severe, can lead to transient or persistent organ failure. About 1/3 of death occur in the early phase of the attack from multiple organ failure. और डॉक्टर को यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन इवन द पेशेंट इज एडमिटेड इन द आईसीयू, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता है कि पेनक्रेटाइटिस में कब ये कॉम्प्लिकेशंस हो गया. मतलब जो टाइम पीरियड है कम मिलता है एंड इट गोज इनटू द कॉम्प्लिकेशंस एंड द लाइफ इज, मतलब डेथ का जो रेट है वो उसमें ज्यादा होता है वंस द पेनक्रियाटाइटिस गेट्स कॉम्प्लिकेटेड और इट इज नॉट मैनेज विद द जो ये है मेडिसिनल मैनेजमेंट है उससे अगर नहीं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से नहीं हुआ तो फिर इट्स डिफिकल्ट. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब क्लिनिकल फीचर. The clinical feature, when the patient present with the acute pancreatitis, then the pain is the cardinal symptoms, but the pain is mostly you can see in the epigastric region. Try to understand epigastrium. It is radiate to chest, it is radiate to back. अंदर से पियर्सिंग पेन रहता है, अंदर से वहां पे पेशेंट को लगता है जैसे अंदर से कोई ऐसे चुभ हो रहा है, तो यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक में पेन होता है और एग्जैक्ट बैक में पेन होता है. दिस इज अ वेरी क्लासिकल इन द पेनक्रेटाइटिस. ये और कोई बीमारी में नहीं मिलता. You can see the epigastric pain in other diseases also, like a gastritis, like a perforated peptic ulcer, like a peptic ulcer, right? But this piercing type of pain and severe vomiting, nausea and retching, barabar hai ki nahi, you can see only in the acute pancreatitis, right? The suddenness of onset is very important. There was a suddenness of onset. मैं simulate the, it is like जैसे sudden severe pain होता है, patient agonizing, twisting, turning, restless होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ heart attack तो नहीं आया, ulcer perforate तो नहीं हुआ, ये कोई biliary colic है. तो there could be a doctor भी कभी, जो even the surgeon can be confused because जो पेन है sudden severe होता है, पेशेंट ऐसे तड़पते रहता है और पेन ऐसा रेडिएट होता है जैसे चेस्ट के तरफ, बैक के तरफ. तो कभी कभी इट इज मिमिकिंग लाइक कि अपर चेस्ट में अगर पेशेंट ऐसे बोल रहा है या ऊपर की तरह हाथ दिखा रहा है तो हार्ट अटैक तो नहीं है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं है. तो और प्रॉपर हिस्ट्री लेना इज वेरी, प्रॉपर हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ इट इज द एपिगैस्ट्रिक पेन radiating, extending, with you get the consumption of alcohol immediately, मतलब immediately after alcohol consumption कुछ देर बाद अगर ये पेन स्टार्ट होता है तो first think about this pancreatitis, right? There was a nausea, there could be a nausea, there is always a nausea, repeated vomiting and retching. This is the mark accompaniment symptoms. The retching may persist despite the stomach being kept empty by nasogastric aspiration. The hiccup can be troublesome and may be due to the gastric distension or irritation of the diaphragm. Hiccup भी हो सकता है because of the irritation of the diaphragm. और retching constant रह सकती है.
अगर आपने राइल्स ट्यूब से पूरा स्टमक का खाना जो भी है कंटेंट वो बाहर निकाल लिया तब भी रीचिंग इज परसिस्टेंट, राइट? That was the acute pancreatitis. Now come to the what is the chronic pancreatitis, right? Chronic में क्या होता है? Chronic inflammatory condition रहते हैं, progressive inflammatory disease है ये, this is important, there is a irreversible destruction of pancreatic tissue. Irreversible according to the definition mentioned in the love and belly, it is the irreversible pathology. It is not reversible. Once the chronic inflammation started, progressive inflammatory inflammation started, the changes that occurred is the irreversible. मतलब वो reverse नहीं होंगे. Its clinical course is characterized by severe pain and in the latter stage exocrine and endocrine pancreatic insufficiency. Exocrine जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन सेल्स है, उसका जो फंक्शन है पेनक्रियाटिक जूस बनाना या एंडोक्राइन सेल्स है लाइक बीटा सेल्स और दूसरे जो फंक्शनिंग है उसमें इनसफिशिएंसी वो हैम्पर्ड हो जाता है, उसका फंक्शनिंग कम हो जाता है या फंक्शनिंग लॉस भी हो सकता है. सो विद द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पेनक्रियास देयर कुड बी अ फंक्शनिंग इज लॉस्ट, functioning is hampered, right? In the early stage of the evolution, it is frequently complicated by attack of acute pancreatitis. Even though patient having the chronic pancreatitis, there could be a acute episodes of abdominal pain or there could be a exacerbation of chronic pancreatitis. जैसे अस्थमा में होता है, अस्थमा तो है chronic, पर acute exposure के कारण, acute triggering factor के कारण acute exacerbation of chronic asthma जैसे होता है. तो इसमें भी कैसे chronic pancreatitis, there is acute abdominal pain, acute episodes, acute abdomen, which are responsible for the recurrent pain. So even though there is a chronic pancreatitis, there could be a recurrent episode of acute abdominal pain, right? You must correlate with our patient. You must correlate this. Etiology, chronic pancreatitis का क्या etiology रहता है? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में अगर आप पढ़ेंगे लव एंड बिली से तो उसमें इटियोलॉजी जो दिया है, फर्स्ट इटियोलॉजी दिया है बिलियरी कैल्कुलाई. बिलियरी कैल्कुलाई मींस कोलेलिथियासिस मींस gallstone or stone in the gallbladder is responsible to produce the pancreatitis, acute pancreatitis or chronic pancreatitis. Second reason is the alcohol, but chronic pancreatitis में alcohol consumption is the most frequently seen. But whatever the cases I have seen, the number of cases 30-40 जो देखा होगा, mostly the acute pancreatitis episode or even chronic pancreatitis is caused due to the consumption of alcohol. Mostly जो बुक में बिलियरी कैल्कुलाई दिया है 70% और 20% दिया है अल्कोहल, but my observation is that कि alcohol is the 70-80% alcohol is responsible for the pancreatitis. बिलियरी कैल्कुलाई से occasionally तुमको केस दिखेगा, out of 100 दो 3 4 5 ऐसे केसेस दिखेंगे, and there could be a 5% ऐसे चांस रहते हैं कि इडियोपैथिक autoimmune disease, auto destruction या पेनक्रियाटाइटिस जो होता है काफी बार ऐसा होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में पेनक्रियाटाइटिस डेवलप हो सकता है ना? पोस्ट ऑपरेटिव की किसी दूसरे चीज का ऑपरेशन किया है और वहां पे इन्फेक्शंस हो गया और पेनक्रियाटाइटिस डेवलप हो गया. दिस कुड बी आल्सो हैपेंड. क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, देयर कुड बी अ पेन is outstanding symptom, nausea, vomiting, and there was a long term nausea या vomiting होता है, appetite reduce होता है या appetite reduce के कारण there was a significant weight loss in the pancreatitis. Because patient doesn't feel like eating, the pain prevents sleep and time of work is frequent. Time of work मतलब patient का जो functioning है, जो duty है, वो भी hamper हो जाता है इसमें. This is a chronic process. The number of hospital admission for acute exacerbation is a pointer towards the severity of disease. मतलब क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस तो है पर एक्यूट एपिसोड आने के बाद उसको एडमिट ही करना पड़ता है. ऑलरेडी स्टेटेड दैट कि ये टैबलेट से उसका पेन नहीं जाता है इन पेनक्रियाटाइटिस, इज रेजिस्टेंट टू द यूजुअल टैबलेट ऑफ पेन किलर, राइट? तो पेशेंट हैज टू एडमिटेड. तो जितनी बार एडमिट हो रहा है मींस द सिवियरिटी ऑफ डिसीज ज्यादा है. This is the prognostic indication. Loss of exocrine function leads to steatorrhea.
आपने देखा होगा अपने पेशेंट में ऑयली स्टूल, वो बोलता था कि फैटी और ऑयली स्टूल है, दिस इज द कॉल्ड एज स्टेटोरिया, and it is seen more than the 30% of patients with the chronic pancreatitis, right? Loss of endocrine, that was the exocrine, loss of endocrine function leads to development of diabetes mellitus, which is mostly a insulin dependent, might be a non-insulin dependent, but when you get the insulin dependent, that means all the cells related which secrete the insulin is get exhausted or destroyed are the common, and the incidence increases with the disease progress. मतलब loss of endocrine function leads to development of diabetes mellitus. Complication frequently bring the patient to attention to the surgeon. Complications अगर हुआ तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा and need a surgical procedure. Infection is frequent possibly due to the diabetes, और ये patient में दूसरे infection भी frequent होते हैं because of the raised blood sugar, right? Now come to the all this देखा diagnosis, final diagnosis क्या रहेगा? There was a CT scan done by the patient on 23 August 2021. उसके पहले भी CT scan किए थे, सोनोग्राफी भी हुआ था, बट ये CT scan जो मेट्रो स्कैन में हुआ है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ. Before the treatment started, it is 2021 August. So we have to, there was a what the reports क्या बोलती है? There is a changes of chronic pancreatitis with hepatomegaly and portal hypertension. हाँ, इसमें सिर्फ हम रिपोर्ट देखेंगे, डायग्नोसिस नहीं देखेंगे. तो changes of chronic pancreatitis with significant ductal dilatation as described above, mild hepatomegaly, mild dilated extrahepatic portal vein which measure 1.45 centimeter, and there is early changes of portal hypertension. Already I have stated the person who having the chronic pancreatitis effects on the liver and portal system leads to portal hypertension and hepatomegaly. So there is all the, and this leads to maybe increase blood pressures, and there is always the there could be a most of the time diabetes mellitus develop. So अपना diagnosis क्या रहेगा? Chronic pancreatitis with acute episode of abdominal pain, means acute recurrent episode with hepatomegaly and portal hypertension with there is a diabetes, with there is a hypertension, and with plus oral submucous fibrosis, and there was a alcohol abuse disorder or alcoholism, right? Till now any doubt? अभी ये डिसीज डायग्नोसिस हो गया, अभी माइजमेटिक डायग्नोसिस करें कैसे करेंगे? दिस इज अपन ने देखा है कि क्या पैथोलॉजी हो सकती है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, है ना, एक्सप्रेशंस क्या है. क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस होने के बाद डायबिटीज डेवलप हो सकता है, होता है, क्यों डेवलप होता है, पेशेंट में हुआ है, बीपी और बढ़ता है, एग्जिस्टिंग बीपी है तो और बढ़ सकता है ना, मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब होता है, परफॉर्मेंस उसका हैम्पर्ड होता है ना, ऑल कॉम्प्लिकेशन इज देयर, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड दिस. सो ये कौन से माइजम में जाएंगे केस? एनीवन वांट्स टू शेयर देयर व्यूज regarding the miasmatic understanding? Anyone having the thoughts कि ऐसा हो सकता है सर, वैसा हो सकता है, you can freely contribute your thoughts, you can share your thought process. So miasmatic diagnosis, because there was a chronic inflammatory process where there is a destruction of the cells happened, where there was a destruction of the cells, which cells, mostly beta cell, leads to insulin dependent diabetes mellitus. With there was a portal hypertension, if alcoholism, submucous fibrosis, all this leads to patient this goes towards the psychosis to syphilis. This case is belongs to psychosyphilis. Any doubt?
Once we understand the miasm, then we can able to approach or totalities differ what symptoms we need like तो अभी डिसीज डायग्नोसिस हो गया, माइजम डायग्नोसिस हो गया, अभी अपन पर्सन देखेंगे कि पर्सन कैसा है, सो दैट वी कम टू द रेमेडी, प्रॉपर रेमेडी। अभी पर्सन कैसा है, लाइफ स्पेस में अपने पढ़े कि फादर बिजनेस करता था, ब्रदर का बिहेवियर कैसे था, है कि नहीं, उसके कारण पेशेंट को अपना बी फॉर्म छोड़ के घर आना पड़ा। मतलब वो कैसे दिखेगा, पेशेंट इज मींस व्हाट वी इंटरप्रेट बिकॉज ऑफ दिस, पेशेंट इज वेरी इमोशनल, वेरी अटैच्ड टू द फैमिली, है ना, वेरी सेंसिटिव पर्सन, कि फादर ने बोला, फादर का कंडीशन उसको देखा नहीं गया कि फादर टेंशन में है, घर डिस्टर्ब है, बिजनेस लॉस हो रहा है, तो पेशेंट कम्स टू होम, राइट। सो फैमिली अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, सेंसिटिव पर्सन दिख रहा है, इमोशनल पर्सन दिख रहा है। सो व्हेन इन्वॉल्व, वो जब बिजनेस में आया तो ब्रदर का बिहेवियर देखे, ब्रदर कंज्यूम करता था दिन भर, पेशेंट जो कस्टमर के कॉल नहीं उठाता था, डिलीवरी नहीं देता था, उसको गुस्सा आता था, बराबर। और ये सब देख के वो गुस्से में उसने भी दारू ड्रिंक करना शुरू कर दिया, बराबर है। इन ऑर्डर टू रिलीव फ्रॉम द टेंशन, जो टेंशन पैदा हुआ था उसको रिलीव करने के लिए, और भाई को बताने के लिए गुस्से में भाई के सामने उसने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया। सो ही इज द अल्कोहलिक, अल्कोहल डिपेंडेंट। देयर वाज एंगर, इंडिग्नेशन, उसको लगता था कि मैं ही बिजनेस कर रहा हूँ, ये भाई कुछ नहीं सपोर्ट कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंडिग्नेशन, लॉट ऑफ देयर वाज अ एंगर, वायलेंट, बिकॉज वो एल्डर ब्रदर होने के बावजूद उसको मारता था, और इतना मारता था ऐसा लगता था कि जैसे मार डालू इसको। So this is all with the anger, violent and alcoholism comes under the syphilitic miasm. He was not able to complete his education, उसके लिए उसको थोड़ा सा bad feel और sad, depressed feel होता है, sadness, depression comes under the psychosis. He got married and take whole responsibility of the family, है ना, but उसमें उसके बाद 2017 में पिताजी और माताजी की डेथ हो गई। सो दो देयर वाज अ रिस्पांसिबिलिटी स्ट्रांग, माताजी पिताजी की डेथ होने के बाद में पूरा घर उसने ही संभाल रहा है और अभी भी संभाल रहा है, दो ही इज द यंगर पर्सन, यंगर सन। सो देयर वाज अ ग्रीफ, और उसका जब पेरेंट्स गए तो उसके बाद उसका ड्रिंकिंग भी बढ़ गया था और बढ़ गया था। सो देयर वाज अ ग्रीफ, loss of parents, loss of loved one leads to the more alcohol consumption. So this is the psychosyphilitic. Responsibility strong is the sora, right? Patient feels very angry over the whether even didn't pick and all this. Anger, violent, kill, desire to in the anger, indignation, syphilis and psychosis, right? सो ऑलवेज आई एडवाइस, दिस इज द की, जब भी ऐसे लाइफ स्पेस है आपके पास, पेशेंट से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल कि लाइफ स्पेस है उससे कैसा इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन एक कॉलम, और अनदर कॉलम इज फॉर द माइजम अंडरस्टैंडिंग। चाइल्डहुड का अगर वो देखता है कि जो कभी ना भूलने वाला जो इंसिडेंसेस है, कि उसके जो अंकल है, मतलब पिताजी के बड़े भाई, उनका जो बिहेवियर था, वो जो डोमिनेट करते थे, ओवर पावर करते थे, पूरे घर को संभालते थे, पैसे नहीं देते थे, पिताजी से काम करा के लेते थे, बराबर है। तो ये सब उसके माइंड में अभी भी चल रहा है। दैट मीन देयर वाज अ ड्वेलिंग ऑन द पास्ट हु इज अ ग्रीवेबल, मतलब दुखी जो है, जिससे दुख हुआ है, वो अभी भी वो याद करता है, और याद जब आती है या याद करता है तो और अल्कोहल पीता है और अल्कोहल कंज्यूम करता है। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स द अंकल, कि उन्होंने ऐसे किया है करके, देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट्रेड। एंगर सप्रेस, दैट टाइम द एंगर वाज सप्रेस, देयर वाज अ हेट्रेड फीलिंग। नाउ द हेट्रेड कुड बी अ साइकोसिस, बट डिपेंड्स ऑन कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कि हेट्रेड है और ऐसे पेशेंट बोल रहा है कि बा उसको जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगा, और देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन हियर। हेट्रेड तो है, पर वो हेट्रेड में पेशेंट क्या कर रहा है, खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है बाय कंज्यूमिंग द अल्कोहल। Try to understand this. Hatred can be a psychosis, but we have taken it as a psychosyphilitic. Why? Because in the hatred was strong. Still, मतलब वो बचपन में घटना हुई है, पर फिर भी वो एंगर, वो हेट्रेड, वो द्वेष, वो अभी है, पर वो जब भी वो रिमाइंड करता है तो ड्रिंक करता है, मतलब अल्कोहल लेता है, मतलब क्या करता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। So there must be a then psychosyphilitic miasm.
dwells on the past disagreeable occurrence and causes the alcohol and consume the alcohol, psychosyphilis. Patient angry in nature, reserve in nature, anger contradiction, you can see wife के अनुसार angry है, abusive है, but there was a remorse feeling. The remorse feeling is the very transient, that's why it is not significant, and this comes under the psychosis. Responsibility strong, family towards is the sora, sensitive is the sensitivity, all sensitivity, even the sensitive to noise is the comes under the soric miasm. Understand this, all sensitivity comes under the soric miasm. Reserve nature मतलब वो अपने जो बातें हैं, जो फीलिंग है, वो अपने अंदर ही रखता है, वो शेयर नहीं करता है. तो देयर वाज accumulation of feeling or thoughts inside, not never expressed outside or even to the wife, जो क्लोज वन है उससे भी शेयर नहीं करता है. तो दिस इज द साइकोटिक माइसम. When asked why there is a abuse, so there was a dwelling hatred feeling, so there was a there is a psychosyphilitic miasm underlying, right? तो ये लाइफ स्पेस से हमने क्या मेंटल सिम्टम्स निकाले हैं, वन बाय वन नोट डाउन कीजिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, फैमिली टूवर्ड्स, अल्कोहलिज्म, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, इज हाईली सेंसिटिव इमोशनल पर्सन. सेंसिटिविटी किसमें है, क्रिटिसिज्म कोई करता है या रेडिकल कोई फन बनाता है, उसका मजाक करता है, तो वो इतना गुस्सा आता है कि उससे बात करना बंद कर देता है, right? So this is the sensitivity of person. Sensitivity is very important to consider in the totality because it is the basic disposition or it is the soric symptoms. Offended easily, reserved in nature, anger violent, anger suppressed, all these are mental symptoms drawn from the जो अपन ने understand किया है. ये totality नहीं है, ये mental symptom है सिर्फ. Anger suppressed था, anger indignation, anger on contradiction, there was a grief silent, है ना, ग्रीफ था, दुख था, उसमें अल्कोहल लेता था, hatred towards a person who has offended, dwells on past disagreeable occurrences, all these are mental symptoms, right? Now इसको मैथमेटिकली क्लासिफाई कीजिए, क्योंकि टोटलिटी में जितना जितना ये लेंगे उतना हम कंफ्यूज होंगे, द रेमेडी क्लियर नहीं होंगी और ग्रुप ऑफ रेमेडीज काफी रहेंगे. सो वी हैव टू टेक, बिकॉज वी हैव डीलिंग विद द साइकोसिफिलिटिक डिसीज, we have to take only the symptoms and psychosyphilitic या purely syphilitic symptoms in order to emerge the remedy. So miasmatic understanding, cleavage table, soric responsibility strong is the sora, sensitivity, all sensitivity is the sora, offended easily is the sora, reservedness, anger indignation, anger suppress, anger contradiction is all psychotic. And psychosyphilitic and syphilitic is the alcoholism, alcohol abuse, indulgence, anger violent कि जैसे कि मारना, kill करना, grief is there, but with grief this is psychosyphilitic, there is lot of alcohol consumption, hatred person, dwelling on the past, this is psychosyphilitic, not purely syphilitic. So comes to the, this is the understanding of the person, understanding of the miasm. Till now we understood the disease, बराबर है, depth of disease. Now come to the miasmatic totality now, on which we can prescribe the remedy. So we can see the soric symptoms, responsibility strong, family towards, sensitive person you get, sensitive to noise, alcoholism, syphilitic, anger violent, reserve person. This is the basic disposition. Reserve मतलब बचपन से ही reserve. That's how we can take these psychotic symptoms, or you can take these psychotic symptoms at the bottom. Grief silent, this is psychosyphilitic, hatred towards the person and dwelling on the past disagreeable occurrences. Patient is hot, again thirsty, thirst, it is not significant once there is a psychosyphilitic or syphilitic case, but you can see the characteristic symptom. This thirst is increased for the cold water, thirst is increased for the cold water, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है. I think this is not a common symptoms of disease, this is the peculiar symptoms of the person, that's why taken into the totality, right? And this is the peculiar symptom. Sun heat sensitivity to sun, this is है ना, headache होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, irritability होती है, sensitivity to tight clothing, and person gets aggravated in general by damp, rainy, cloudy weather. This is also sensitivity to the person. So by this, which remedy we there emerge? This is the
टोटल अंडरस्टैंडिंग, हाँ। और दूसरा, और हम बोल सकते हैं कि विच ऑर्गन इज अफेक्टेड, पेनक्रियास इज अफेक्टेड, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन, लीड्स टू डायबिटीज, लीड्स टू हाइपरटेंशन, मोर हाइपरटेंशन, लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन, biliary system involved, right? This is also you must think while selection of the remedy. Anyone wants to comments on this, or any remedy you suggest? Hello. Anyone wants to suggest which remedy most likely comes with this understanding? Yes, anyone? Anyone want to give reply? You can unmute yourself if you want to reply on the sir's question. No matter, don't afraid ये बस गलत हो जाएगा. As a student, you have the authority, you have the power. मतलब वो लीगल अथॉरिटी है गलती करने का, बराबर है कि नहीं? एज अ प्रैक्टिशनर हम गलती नहीं कर सकते, या क्योंकि गलती कर करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो कम से कम गलती होना चाहिए एज अ प्रैक्टिशनर. दैट्स व्हाई कि एज अ स्टूडेंट जब इंटर्नशिप में आप जाते हैं, इंटर्न्स होते हैं, केसेस लेते हैं, है ना, ऑलवेज शोन टू द सुपरवाइजर सो दैट आपकी जो गलती है वो सुधारे, आपकी गलती है जो मिस्टेक्स है वो रेक्टिफाइड हो. तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बराबर है कि नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम गलती, क्योंकि प्रैक्टिस में हम अकेले होते हैं चेंबर और अपने साथ पेशेंट होता है. तो जो भी हम करते हैं, केस लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और रेमेडी देते हैं, कोई रेक्टिफाई करने के लिए नहीं रहता है, हम खुद ही अपने बॉस रहते हैं, राइट? So if you do the repertorization by, there is a lot of symptoms, even we can eliminate the symptoms, reserve eliminate किया है. So if you repertorize the all these miasmatic totality से जो symptoms हमने note down किए हैं, तो remedies which are coming जो पूरे symptoms को cover करते हैं is the nitrum group, nitrum mur, calcarea, aurum and kali. Nitrum mur, calcarea, aurum and kali. So पीछे से start करेंगे. Kali carb, is it the person is Kali carb? How is the Kali carb person? Comments लिखे नहीं है मैंने because of lack of time. How is the Kali carb? Kali carb first is the very anxious person. Anxiety trifles, anxiety health about, है ना, anxiety इतना रहता है. काली अगर ग्रुप देखेंगे कि वो सस्पिशियस भी रहता है, डॉक्टर ठीक करेंगे कि नहीं, डाउटफुल अबाउट द रिकवरी, anxiety and frightened easily, startle noise from, and at the same time he is also duty bound, मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग रहता है काली कार्प में, ड्यूटी बाउंड भी रहता है, बट इरिटेबल एंड एंशियस रहता है, फियरफुल रहता है, बट ही इज वेरी रिजिड पर्सन. रिजिड, जितने जो रूल्स है उसमें ही चलेगा, वो इधर उधर नहीं है, डॉगमेटिक है, जो पहले से ही बंधे हुए रूल्स है उसको ही फॉलो करेंगे और दूसरों को वो फॉलो करने में ये करेगा, फोर्स करेगा. इजीली फ्राइटेंड एंड एक्सेसिवली एंशियस पर्सन काली कार्प, राइट? दूसरा औरम जो होता है इज वेरी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव पर्सन रहता है, हाईली कंसेंशियस पर्सन रहता है, ये करूँ कि वो करूँ, कंसेंशियसनेस इज वेरी हाई इन द औरम. दैट्स व्हाई थोड़ा भी गलती होता है तो गिल्ट में चले जाता है, अरे मेरे से गलती हो गई है, मैं गुनाह कर लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट patient goes into the severe depression and later on patient develop the suicidal thought. This is the aurum. This is not the short part of the aurum. He is very duty bound, strong, responsibility भी strong है, पर responsibility attachments towards family नहीं है, duty bound है, वर्कहोलिक है, जो काम, इसलिए हायर प्रोफेशन में ये रहते हैं और वो काफी वर्कहोलिक होते हैं, ड्यूटी बाउंड होते हैं, जो बिजनेस या जो ड्यूटी वो कर रहे हैं उसको बहुत ईमानदारी से करते हैं.
मेरे एंजाइटी कंसाइंस, कंसाइंशियस भी रहता है और एंजाइटी कंसाइंस भी रहता है। एंजाइटी कंसाइंस मींस कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहता है। सो ही इजीली डेवलप द गिल्ट इन इज द होपलेस, और जब ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो डिस्पेयर हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, और इजीली लीड्स टू द सुसाइडल थॉट एंड सुसाइडल टेंडेंसी। और कलकिरिया इज वेरी डिपेंडेंट पर्सन, वो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी रहता है, तो सिक्योर सिक्योर जो प्लेस है वहीं पे वो ज्यादा रहेगा, इनसिक्योरिटी जहाँ पे है, या रिस्क नहीं लेगा, बराबर है कि नहीं। अटैचमेंट रहता है, बट मटेरियल थिंग्स में अटैचमेंट ज्यादा रहता है कलकिरिया में, पर्सन से नहीं। अगर वेल्थ है, पैसे है, तो उसमें अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, बिकॉज दिस मटेरियल थिंग्स गिव्स कलकिरिया मोर सिक्योरिटी। fearful, highly fearful, dependent, indecisive, fear of disease, fear of future, fear of anxiety about health, lot of anxiety and lot of health issue, anxiety about health, क्या होगा कैसे होगा, बराबर। वर्कहोलिक रहता है, पर वर्क कैसे, जो रूटीन का वर्क है वही चाहिए, ज्यादा इधर डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर वो वहां से उधर कलकिरिया को बोले कि बा प्रमोशन देना है, आपका पगार बहुत बढ़ेगा, बराबर, बट ही वांट्स द रूटीन, कि ज्यादा चेंज नहीं चाहिए उसको, लाइक अ बराइटा। नाइट्रम म्यूर इफ यू सी इज हाईली सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, इमोशनल पर्सन, इजीली ऑफेंडेड पर्सन, रिजर्व, है ना, इंट्रोवर्टेड रहता है काफी, है ना, कंसेंशियस रहता है, ड्यूटी बाउंड रहता है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ब्रूडिंग टेंडेंसी काफी रहता है, ड्वेलिंग टेंडेंसी काफी रहता है, एंड दिस पर्सन, सो जो दुख रहता है जो नाइट्रम ग्रुप में या नाइट्रम में, इज ऑलवेज अ साइलेंट और इंटरनल, दे नेवर सरफेस पे नहीं आता है, और सेंसिटिविटी इतना हाई रहता है, सेंसिटिविटी टू रेडिकल, सेंसिटिविटी टू रिप्रोच, सेंसिटिविटी टू स्कोल्डिंग, है ना, दे इजीली गेट ऑफेंडेड एंड इंसल्ट फीलिंग, सिमिलर मतलब रिलेटेड टू स्टैफिसैग्रिया। So nitram group having this, but if you see there is a matching with the nitram mure, right, than the calcarea aurum and kali. But if you see there is a strong attachment towards the family, and strong attachment towards the family. If you see, refer the rubric attachment or family towards, or responsibility strong, family towards, only 2 to 3 remedies are there, and one of the remedy is the nitram, not a nitram mure, it is a nitram sulf. Strong attachments towards the family, or responsibility strong family towards. जो 2-3 मेडिसिन है वो रेयर मेडिसिन है, ओनली जो पॉलीक्रिस्ट है यूजेबल जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं उसमें नाइट्रम सल्फ है। एंड अगेन इफ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर जो मैंने बोला था, क्रेविंग फॉर कोल्ड वाटर इन द डिसीज कंडीशन, पहले थर्स्टलेस होगा पेशेंट चाहे, बट अभी जो है उसको थर्स्ट है, थर्स्ट इंक्रीज है, बट फॉर द कोल्ड वाटर इज अगेन फॉस्फरस जैसे है, आर्सेनिक जैसे है, नाइट्रम सल्फ इज कवर 3 to 4+, 3+ नाइट्रम सल्फ, बराबर। अगेन complaints aggravated by damp cold rainy weather in general, not a disease नहीं, pancreatitis नहीं पड़ता damp weather, poor patient feels complaints of headache, dullness, irritability in damp cold rainy weather. This is the peculiar symptoms in nitram sulf only among all nitram group, right? So if you understand, though the repertorization, that's why always it is said that the repertorization is not a tool to finalize the remedy, repertorization is the tool to come to the group of remedy. ग्रुप ऑफ रेमेडी आने के बाद हमारा जो मट रेमेडी का अंडरस्टैंडिंग है या रूब्रिक्स कौन सा है स्ट्रॉन्ग, या उससे फिल्टर करके फिर हमको मेडिसिन को फाइनलाइज करना है, नॉट की बार नाइट्रम्यूर आया रे पहला नाइट्रम्यूर दे दो, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। नाइट्रम सल्फ है तो नाइट्रम सल्फ ही आएगा, उससे ही रिजल्ट मिलेगा, नाइट्रम विल नॉट गेट द रिजल्ट, कलकेरिया विल नॉट गेट द रिजल्ट। So how I come to the nitram self, understood? Strong family attachment, aggravation, damp cold weather, craving for cold water. Though nitram के सभी symptoms यहाँ पे मिल रहे हैं, but वही choose the not a nitram और nitram carb भी नहीं choose किया, nitram phos भी नहीं किया, वही choose the nitram self. Is it right or is it okay?
सो नाइट्रोम्यून कल्किरिका बौरम कालिका, इसमें डिफरेंशिएशन बताया मैंने, राइट। अभी देखते हैं क्या नाइट्रम सल्फ दिया है। अभी 26/11 को जब पेशेंट आया तो नाइट्रम सल्फ, because there is a severe inflammations with the complications, we matlab not go usually to single dose but the repetition, because there is a chronic pathology, chronic progressive disease we are dealing with. And you can see the patient आया तो ना कुछ खा सकता था ना पी सकता था, बिकॉज एवरी अटेम्प्ट और इवन थोड़ा सा भी ज्यादा खाना, थोड़ा सा भी एक रोटी से ज्यादा, ब्लैंड डाइट नहीं, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा सब्जी अगर ले लिया तो तकलीफ बढ़ती थी, रेचिंग शुरू होती थी, नोशिया वोमिटिंग शुरू होता था. So patient is in the distress. So here in such a cases, when you see the alcohol consumption is the main causative factor, so you have to advise the patient to strict not to consume the alcohol, because it is the poisoning for you. It leads to the worsening of your disease and leads to the unwanted consequences, right? So strict diet is very important here. जैसे चल रहा है कि bland diet से, तो bland diet ही दो. Even if you want the support of dietitian, you can take for the advice for diet. Nitram sub 200 BD for 5 days was prescribed, and SL for 2 weeks. Though the patient was away from the Nagpur, that is Ballar Shaka hai, but I want him to see within a 2 weeks. ऐसे नहीं, पेशेंट डिमांड कर रहा था सर बहुत दूर से आ रहा है, 1 महीने का दे दो, बट द पेन की इंटेंसिटी, रिकरेंसी, वो सब देख के 1 हफ्ते में यार 1 वीक या 2 वीक में फॉलोअप होना बहुत जरूरी है. You can even you can prescribe or you can give the medicine, acute medicine. कोई अगर पेन अगर सीवियर होता है तो कोलोसिन या और कोई मेडिसिन अगर आती है तो आप एसओएस दे सकते हो पेशेंट को. With this my homeopathic medicine, patient also are taking the insulin 444, telomerase and amlodep D, and there is a lipase. There was a one enzyme tablet is there, lipase is also continuing. Never stop the remedy, never stop the even the allopathic medicine suddenly. बराबर है. अभी एक्ट्रापेट तुमने मेडिसिन अभी जस्ट प्रिस्क्राइब किया और तुम बोलोगे कि ये सब मेडिसिन सब बंद कर दो. डोंट डू दैट, पेशेंट में गोज इनटू द वर्स्ट कंडीशन. So once you confirm that your medicine is registered, patient feels better, then gradually you can taper out the other medicine. But usually I have do की gradual tapering करता हूँ. तो patient और I mean because there was a diabetes, insulin dependent diabetes, तो 4 यूनिट 3 बार लेता है. 2 मेडिसिन ब्लड प्रेशर की है. अभी दोनों मेडिसिन में 2 कंटेंट है, मतलब 4 मेडिसिन चल रहा है, सी है ना. Now the pressure bound. तो नाइट्रम सब दिया, व्हाट यू एक्सपेक्ट. अभी 26/11 को मेडिसिन दिए हमने, 27/12 को आया है, मतलब 3 वीक्स बाद आया है पेशेंट. So in these 3 weeks there was no episode of pain since the treatment started, which is very, I not even expected इतना ये होगा fast. There was no episode of pain. Alcohol consumption totally बंद था. This is very important. And ask the patient. और कभी भी पेशेंट को कभी नहीं पूछना एडिक्शन के बारे में. पेशेंट को तो पूछना, पर उसके जो अकम्पनीड है, जैसे हस्बैंड आया है पेशेंट है, तो वाइफ को पूछना हमेशा कि ये इनका जैसे खर्रा कोई खाता होगा, दारू पीता होगा. यू मस्ट आस्क द वाइफ, क्योंकि जो भी एडिक्टेड पेशेंट रहते हैं, डिपेंडेंट पेशेंट ऑलवेज लाई, वो झूठ बोलते हैं, वो छुपाते हैं, दे हाइड. और अगर 1-2 बार पिया भी होगा तो बोलते नहीं सर नहीं पिया, मतलब बोलते हैं खर्रा नहीं खाता हूँ. जब हम ड्रॉप देने मुंह खोलने लगा दे तो खर्रा मुंह में रहता है, बराबर है. सो ऑलवेज आस्क द रिलेटिव्स, ऑलवेज आस्क द अकम्पनीड, जो क्लोज पर्सन रहता है दैट पर्सन. एडवाइस, हाँ, हियर बिकॉज देयर वाज नो एपिसोड ऑफ पेन, देयर वाज नो नाउशिया, नो वोमिटिंग, पेशेंट को ब्लैंड डाइट ही चल रहा था. सो विथ रिस्पेक्ट to the improvement in the 3 weeks, I advise the patient to take now the increase the amount of or quantity of food. जैसे 1 रोटी खाता है तो आप 2 रोटी खाइए, दाल चावल खाइए, और इंक्रीज कीजिए, आप डाइट लीजिए अच्छे से. बिकॉज देयर वाज अ लॉस ऑफ वेट, इट इज 14 kg लॉस. और हमको फॉलोअप में ये भी देखना है कि वेट इतना लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन और बिकॉज ऑफ द डिसीज, द वेट मस्ट इंक्रीज. अगर आपके सिम्टम्स रिलीफ हो रहा है पेशेंट को सिम्टोमेटिक, और वेट और रिड्यूस हो रहा है या वेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो दिस इज द डाउटफुल कि मेडिसिन अच्छी काम कर रही है.
ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सो एडवाइस फूड एपेटाइट उसका इंप्रूव हो गया, भूख लगने लगी, पहले भूख नहीं लगती थी, भूख अगर खाना खाया तकलीफ होती थी। स्लीप इंप्रूव हो गया, स्टूल इंप्रूव हो गया, जो पहले कैसा स्टूल आता था, ग्रीजी आता था, स्टेटोरिया, स्टूल थोड़ा ब्लैकिश आता था, ब्लैकिश मींस हिमोरेज था, कहीं तो भी डिस्ट्रक्शन है, कहीं तो भी हिमोरेज है और सिफिलिस है, तो स्टूल का कलर भी चेंज हो गया और स्टूल इंप्रूव मतलब थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री होगी, वीकनेस इंप्रूव हो गया, जो खाना नहीं खाता था तो वीकनेस डेवलप हो गया, तो वो भी इंप्रूव हो गया। और पेशेंट आल्सो फील्स बेटर मेंटली, क्योंकि पेशेंट ने होप छोड़ दिया था कि अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद क्या होगा क्या नहीं, है ना। पेशेंट को पता नहीं था कि आगे क्या होगा करके, तो ही वाज टेंस अबाउट दैट, फैमिली वाज आल्सो टेंस। वेट 61, आई थिंक 1 किलो बड़ा है। बीपी वाज 140/94, यहाँ पे बीपी, हाँ अगर शुरुआत की बीपी देखेंगे तो 150/100 था, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हुआ है विद योर आवर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन नाइट्रम सल्फ 140/94। और पर एब्डोमेन में अगर शुरुआत में किया था तो टेंडरनेस था एपिगैस्ट्रिक रीजन में और डिस्टेंशन लग रहा था। नाउ देयर इज नो टेंडरनेस और पाल्पेशन, दिस इज अ गुड साइन, दिस इज गुड साइन। नॉट ओनली द सिम्टम, एग्जामिनेशन फाइंडिंग इज आल्सो इम्प्रूव। और इसमें और एक छूट गया है, तो जब पेंक्रियाटिस में इन्फ्लेमेशन होता है तो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, अमाइलेज लाइपेज, तो अमाइलेज लाइपेज भी उसका बढ़ा हुआ था, दैट वाज आई फॉरगेट टू नोट डाउन। तो अमाइलेज लाइपेज इंप्रूवमेंट सिर्फ सिम्टम्स लेवल पे नहीं आना चाहिए, इंप्रूवमेंट पैथोलॉजी के लेवल पे भी होना चाहिए। तो अमाइलेज लाइपेज अगर उसका बढ़ा है तो इट शुड बी इन अ नॉर्मल आफ्टर योर मेडिसिन। आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कब आया है पेशेंट, 17 दिसंबर को, और 17 दिसंबर के, हाँ 17 दिसंबर को इन्वेस्टिगेशन किया है पेशेंट ने। तो फर्स्ट जो बढ़ा हुआ था वाज नॉट मेंशन, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा है 110, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अमाइलेज 110 है जो 100 के, तो पहले आई थिंक 200 या 250 था, 250। लाइपेज भी काफी बढ़ा हुआ था, कोई रेंज में था 250-300 के रेंज में, वो 74 हो गया है। सीरम बिलिरुबिन नॉर्मली है, एजीपीटी पहले भी नॉर्मल था, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। अगेन आई प्रिस्क्राइब द रेमेडी, एसएल नहीं दिया है अभी क्योंकि पैथोलॉजी जो है वो डीप पैथोलॉजी है, सुपरफिशियल या फंक्शनल डिसीज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिसीज है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ है, तो हमको रिपीटेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे नाइट्रम सब 200 बीडी डोज में 3 डेज के लिए दिया और एसएल 2 वीक्स के लिए दिया है। नाउ और चेंजेस क्या हुआ है, इंजेक्शन ह्यूमन एक्ट्रापिड जो है, जो 444 3 टाइम था उसको 2 टाइम किया है, और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स था वो भी चल रही है एज इट इज ना, वो है मेंशन नहीं किया पर चल रही है। बट ओनली चेंज जो एलोपैथी में जो चेंज किया मैंने, 444 3 टाइम्स था वो 2 बार किया है। सी कि अभी 2 बार करने से उसका शुगर कैसे रहता है, जो शुगर शुरुआत में एकदम 400 450 था, बाद में 250 300 था, अभी कैसे शुगर है 2-1 मतलब। और 15-20 दिन बाद पेशेंट आया है, 2-1 मतलब नए साल में 2022। पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ टाइटनेस ऑफ एब्डोमेन सिंस 4 days रिमेन्स फॉर होल डे, मतलब 4 days बैक उसको टाइटनेस ऑफ एब्डोमेन हुआ था, मतलब पेन नहीं हुआ, मतलब सीवियर पेन या एपिसोडिक पेन नहीं था, पर देयर वाज अ टाइटनेस ऑफ एब्डोमेन था व्हिच रिमेन्स फॉर होल डे। उसने कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लिया, स्टूल नॉर्मल है अभी भी, पेशेंट नॉर्मल डाइट पे कर दिया है अभी क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट नहीं है, एपिसोड चले गए हैं। वेट इंप्रूव हुआ है पेशेंट का 3 kg, बीपी 140/94 है, मतलब पहले से लोअर हुआ है, पर एब्डोमेन सॉफ्ट और नॉन टेंडर है। आरबीएस कम्स टू 111, आरबीएस कम्स टू 111, मतलब नॉर्मल रेंज में आया है। शुगर शुगर नॉर्मल रेंज में आया तो हम इंसुलिन की मात्रा और कम कर सकते हैं बिकॉज अपनी मेडिसिन चल रही है। नाइट्रम सब यहाँ पे भी दिया है ड्रॉप एंड 2 पैकेट, और डोज कम किए उसके 2 पैकेट डेली मॉर्निंग, मतलब कल भी परसों भी। और एसएल 2 वीक्स की ह्यूमन एक्ट्रापिन इंजेक्शन की डोज कम किए हैं। देखते हैं आगे, 2-1 को दिया है, अभी कब आता है पेशेंट, 23-1 को, 23 दिन के बाद, मतलब 3 हफ्ते बाद आया फिर से। There was no episode of pain, even no tightness of abdomen. Occasionally gases होते हैं, but still stool is normal. No greasy, no steatorrhea, no blackishness. There is a mouth fibrosis भी था, जिसमें difficulty in opening was slightly better था.
वेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बीपी 140/90 हो गया, जो 140/94 था 140/90 अभी मेजर्स हो गया, इट इज अगेन इम्प्रूवमेंट। दो बार दो को आया पेशेंट फरवरी महीने में, हाँ फरवरी महीने में आया। माइल्ड एब्डोमिनल पेन 2 टाइम्स इन होल, मतलब एक 3 हफ्ते या 1 महीने में 2 बार थोड़ा सा माइल्ड पेन हुआ है। आफ्टर टेकिंग नॉनवेज, मतलब पेशेंट ने नॉनवेज खाना भी शुरू कर दिया, उसको अच्छा लगा। फुल डाइट तो शुरू कर दी थी लास्ट फॉलोअप में, तो फुल डाइट टॉलरेट कर रहा है, तो पेशेंट नॉनवेज खाना थोड़ा शुरू कर दिया है, तो नॉनवेज खाने के बाद थोड़ा सा तकलीफ हुआ, बट उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा डाइट चेंजेस एडवाइस करके उसको सेटल हो गया। स्टूल ऑकेजनली लूज मोशंस होते हैं नॉनवेज खाने के बाद, सो आई हैव गिवन उसको एसओएस में नक्सोमिका दिया था कि अगर नॉनवेज खाने के बाद अगर थोड़ा या ज्यादा तकलीफ होता है तो आप कॉल कर सकते हैं। दैट टाइम नक्सोमिका 1 या 2 बार दिया है मैंने उसको लूज मोशन के लिए, जैसा। occasionally there is a burning urination, weight increase 62, bp 140/90, RBS 62, ग्लूकोमीटर से किया मैंने, उसको चेक नहीं किया था उसने, तो RBS 62 आया था, इट इज लेस देन नॉर्मल, हाइपोग्लाइसेमिया है ये, तो बराबर है। सीरम अमाइलेज कम टू 68, जो 100 था 110 था, अभी 68 आया है। सीरम लाइपेज 38, तो ऑल दिस पैरामीटर्स आर नॉर्मल। लिवर प्रोफाइल तो नॉर्मल ही था, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल ही है, WBC नॉर्मल है। तो अमाइलेज लाइपेज इज द गुड इंडिकेटर कि ये सेटल्ड हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बराबर है या कम हुआ है, तो लाइपेज और अमाइलेज की जो मात्रा है वो नॉर्मल आई है, एब्सोल्युटली नॉर्मल, बराबर है। तो और बीपी 140/90 है, तो नाइट्रोम सल्फ डेली दिया है 5 डेज, बिकॉज बीच में लूज मोशन हुए हैं, इसलिए पहले 3 पैकेट से 3 डोज दिया था, अभी 5 डोज दिया है डेली, और SL 3 वीक्स के लिए दिया है। एंड एडवाइस टू स्टॉप टैबलेट लाइपेज, जो लाइपेज इसको चल रहा था, ये एंजाइम है जिनको भी पेनक्रियाटाइटिस होता है, ये लाइपेज टैबलेट दिया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आई एडवाइस टू स्टॉप द इंसुलिन, जो एक्ट्रापिड जो 2 डोज ले रहे थे सुबह शाम, मैंने बोला कि अब बंद कर दो, देयर इज नो नीड टू टेक द इंसुलिन, एंड एडवाइस द MRI एब्डोमेन to stop the tablet lipase and stop the insulin, but still the antihypertensive drug is continued। antihypertensive जो ड्रग चल रहे थे ना, एम्लोडेप एम्लोरेज है ना, वो चल रहे हैं। there was still in the 3rd month there was no episode of pain। वो नॉनवेज, मतलब वो तरस गया था नॉनवेज खाने को कितने महीनों से, वो प्रॉपर घर का नॉनवेज खा पा रहा है, उसमें स्टूल नॉर्मल है, लूज मोशंस नहीं हो रहे हैं नॉनवेज खाने के बाद, टॉलरेट बट स्मॉल अमाउंट। उसको बताया कि किस तरह से नॉनवेज खाना है या कैसे मात्रा में। वेट 65 हो गया, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, 65 60 62 63 एंड नाउ 65। बीपी 140/90 स्टेबल है, 140/90। अगेन 6वें महीने 3 महीने बाद गैप में आया है पेशेंट, 2 से 3, उसको अच्छा लगा, तो उसको लगा कि अभी आराम हो गया, तो अभी थोड़ा सा ढिलाई कर दिया, और 2 से 3 बार उसने अल्कोहल कंज्यूम कर दिया। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑलवेज विद द अल्कोहलिक पेशेंट और अल्कोहल एडिक्टेड जो होते हैं, छोड़ तो देते हैं, फिर पेशेंट को आराम मिलने के बाद या तकलीफ कम होने के बाद फिर से वो डाइवर्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ऑलवेज देयर इज अ काउंसलिंग करना है आपको, उस उनके जो वाइफ है, जो उनकी जो पार्टनर है, उनको भी काउंसलिंग करना है, उनको ओरिएंट करना है कि इन्होंने अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर अल्कोहल लेंगे तो डिसीज वर्सन हो सकता है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे तब। कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन स्टार्टेड इंटरमिटेंटली आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, अभी 2 महीने बाद, मतलब पेशेंट ने मेडिसिन बंद किया, मतलब लिया नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजन, और इवन अल्कोहल स्टार्ट किया 2 से 3 बार, तो थोड़ा सा कंप्लेंट स्टार्ट हो गया, कंप्लेंट्स बढ़ गया, फुलनेस इन एब्डोमेन एंड एब्डोमिनल पेन। वेट 65 हुआ है, वेट बढ़ा है, बीपी 130/94 दिख रहा है अभी, बट स्टिल द पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करने के बाद टेंडरनेस वगैरह नहीं है। सो आई हैव प्रिस्क्राइब द मोर डोजेस, बिकॉज ये अल्कोहल कंज्यूम किया और सिम्टम्स बढ़ गए, बट सिम्टम इंटेंसिटी एकदम माइल्ड है। हाँ, दिस इज नॉट सीवियर पहले जैसे, जहाँ पे उसको एडमिट होना पड़ता था, अभी एडमिट होने की जरूरत नहीं है, दिस इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। बट अल्कोहल जो लिया है, दिस इज स्ट्रिक्टली उसको
हमको पेशेंट को बोलना है कि डोंट कंज्यूम द अल्कोहल स्ट्रिक्टली. सो नाइट्रम सब अगेन बीडी डोज में दिया है 5 दिन के लिए एंड एसएल 1 महीने के लिए दिया है. आफ्टर 1 month माइल्ड पेन 2 to 3 times, appetite normal, orient about total restriction of consumption. क्योंकि यहाँ पे भी उसने कुछ थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम किया था. वेट नाउ 66 kg, वेट बढ़ ही रहा है बराबर. पहले 73 या कुछ 75 था, 60 से अभी 66 हो गया. 6 kg वेट बढ़ा है since the treatment started. BP 130/80 दिख रहा है यहाँ पे, mmHg, because the BP settling gradually, BP कम हो रहा है. सीरम लाइपेज नॉर्मल है, अमालेज नॉर्मल है, सीबीसी नॉर्मल है, लीवर प्रोफाइल नॉर्मल. तो मैंने क्या किया, उसमें बीपी की जो 2 मेडिसिन थी उसमें से एम्लोडेप डी बंद करने के लिए बोला. एडवाइस टू स्टॉप एम्लोडेप डी. मतलब पूरा एकदम से नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप. एम्लोडेप डी पहले से इंसुलिन स्टॉप किया है, शुगर लेवल नॉर्मल है, दो यहाँ पे लिखा नहीं है, शुगर लेवल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, दो स्टॉप द इंसुलिन. नाउ एंटी हाइपरटेंसिव 2 से 1 बंद कर रहे हैं. सो सी व्हाट हैपन. बेटर, देयर इज नो एब्डोमिनल पेन इन द 1 month. 8वां महीना चल रहा है. बेटर, नो एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल पेन, गुड. वेट 66 kg है, बीपी 130/84 है. दो 130/90 भी आता है. मतलब दो we stop the one hypertensive medication, still the BP is in the control in the normal range. This is a good, है ना, good sign. शुगर सॉरी इंसुलिन बंद किया है, बीपी की एक गोली बंद, लाइपेज टैबलेट बंद हुआ है, ओनली द मेडिसिन, एक ही बीपी की गोली चल रही है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है. तो नाइट्रम सब यहाँ पे डेली दिया है 5 days के लिए. रिपीटेशन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. 10वें महीने में बेटर नो एपिसोड ऑफ 66.5 kg, बीपी 130/84 और एब्डोमेन सॉफ्ट, नो एपिसोड, है ना. और यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है, बराबर है. सो in these 2 months you can see there is no episode of abdominal pain. अभी 10वें महीने से वो आया नहीं था तो फोन पे बात किया है, तो still the patient is better, still patient having no episode of abdominal pain. strictly उसको कहा है कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, but now the patient is taking the full diet including non-veg, spicy, right. दो मतलब जितना पेट भर खाना चाहिए उतना पेट भर खा पा रहा है. देयर इज नो, इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो एपिसोड ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन द सीरम अमाइलेज लाइपेज. इंप्रूवमेंट जो डिस्ट्रक्शन हुए थे, मतलब अगर इंसुलिन स्टार्ट कर रहा है तो देयर वाज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स. तो इंसुलिन बंद हुआ है, मतलब बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है विच इज नेचुरल, जो पहले नहीं कर पा रही थी that amount of. So this is the good. So no episode of abdominal pain and insulin बंद हुआ है, tablet lipase बंद हुआ है. In spite of that, patient is going better. So only thing is that pathologically if you see amylase lipase normal आया है, BP normal है, weight बढ़ रहा है. CT scan needs to understand CT scan changes जैसे hepatomegaly, portal hypertension और chronic changes of chronic pancreatitis. Because if you see the book has mentioned it is a irreversible changes, but though if we can't able to reverse the whole pathology, if you able to give relief to this much and our medicine is continue रहेंगी, I expect the good, मतलब pathology भी reverse होना चाहिए. So when we do the MRI of that abdomen, then we can we know कि how much pathology is getting reverse और उसमें कितना improvement हुआ है. So symptomatically and all these parameters shows there is a good improvement on the disease side, right. So this is the case of chronic pancreatitis with portal hypertension, with there is a dilatation of pancreatic duct, with there is a alcohol, with there is a hypertension, with there is a diabetes mellitus, right. So now the patient is free from episodes, free from diabetes, right. He can consume the sugar. So any query regarding this condition, regarding the case, regarding the remedy selection, regarding the MISM?
पूरा 1 साल हुआ है अभी पेशेंट को, and still the treatment is going on. I have to see how much relief I can give by homeopathy. You can raise your queries. If anyone has queries, you can raise, or you can put it in the chat box also. Thank you so much, sir, for this informative and wonderful session. Sir has explained a case of pancreatitis, its etiology, diagnosis, its miasmatic diagnosis, and how to convert patient feelings into the rubrics. Thank you so much, sir, for this innovative lecture. Now I request Dr. Sonam Yadav for the vote of thanks. Good afternoon all. I, Dr. Sonam Yadav, Assistant Professor from the Department of Physiology. It's a great honor and privilege to propose the vote of thanks in national webinar. I would like to start by giving glory to Almighty God for making today's webinar a resounding success. I would like to thank our special speaker, Dr. Pankaj Nimje sir, who honored this webinar with his inspirational thoughts. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. Besides, I am thankful to our director, Bhausab Jite, our respected principal, Dr. Barbat sir, AHMC team, Dr. Akhilesh Kasar, and viewers. I would like to extend my gratitude for Dr. Pradnya ma'am, who really took efforts for smooth running event. Last but not least, I would like to thank Naman behind the scenes who organized and managed the technical issues. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you, madam. And it's also my privilege that the sir, principal sir, Dr. Barbat sir, give me the chance to share my thoughts and case. I also thankful to AHMC team, my colleagues. Right? Thanks, madam. Thanks, sir. Thank you so much, Dr. Pankaj Nimje sir. Thank you, Dr. Sonam, for the vote of thanks. Success is not only for the elite. Success is there for those who want it, plan for it, and take action to achieve it. So now I want to conclude today's session. Thank you all of you for being a wonderful audience. Once again, thanks to the hard work that all team members have done to make this possible. Take good care of yourself. Goodbye.